ऑपरेशन लेजर वाला किया अच्छा ऑपरेशन और ऑपरेशन किया वो for female patient 110. Bismillahirrahmanirrahim. My name is Dr. Salam Liaquat. Today the topic of our class is congenital anomalies of larynx and their management. First of all, we will discuss about the embryology. At end of 8th week, larynx identifiable epithelial lamina dissolves, resulting in opening into trachea. 3rd month, vocal process developed from arytenoid thyroid cartilage fuse in midline. At the 5th and the 7th month, epiglottis mature to fibrocartilaginous, corniculate, and cuneiform becomes evident. Postnatal development. Larynx rapidly grows between 1 and 3rd year of life. At birth, it lies between C1 and C4. At age of 2 years, descends inferiorly, axis changes. At the age of 6 years, it reaches between C4 and C7. Here is a difference between pediatric and adult airway difference. Anatomical wise, there is a difference of tongue, epiglottis shape, epiglottis level, trachea, larynx shape, larynx position, narrowest point, and lung volume. Congenital anomalies. Congenital anomalies are the product of errors in embryogenesis, malformation, or result of intrauterine events that affect embryonic and fetal growth, deformations, and disruptions. Defect in the formation and growth of the larynx lead to a variety of malformations. Classification. At the supraglottic level, glottic level, and subglottic level. First, we will discuss about the supraglottic level, laryngomalacia, laryngeal cyst, congenital laryngocele. At the glottic level, laryngeal web, vocal cord paralysis, and subglottic level, subglottic stenosis, and laryngeotracheal cleft. Clinical manifestation by which the child can present respiratory obstruction, stridor, weak cry, dyspnea, tachypnea, aspiration, cyanosis, and the sudden death. First of all, we will discuss laryngomalacia. Malacia means softening of a part. Most common cause of a congenital stridor, softness, lack of consistency of laryngeal tissues, thinning and hypocellularity of its cartilage, wrinkled, loose, or redundant mucosa over arytenoid cartilage. Here we can view through a scope normal voice box where breathing through a normal opening is quiet, and floppy voice box where the breathing through floppy opening is noisy. Clinical features of laryngomalacia: only inspiratory stridor, high-pitched crowning and fluttering, first noticed few days after birth, tend to increase in severity during first to 8 months, then decreases. Often intermittent, feeding difficulties leading to failure to thrive, rarely respiratory distress. How we would diagnose laryngomalacia? Diagnosis made by endoscopy, tall, tubular, enrolled epiglottis, tendency to prolapse backward, omega-shaped. Here we can say the omega-shaped epiglottis. Short, flaccid, medially prolapsed aryepiglottic fold, prominent elongated arytenoid cartilage, whole supraglottis is deepened and narrowed. Management. Reassuring the parents that the prognosis for child is favorable. Position changes. And now what is the role of position changes? That stridor subsides on placing the child in prone position and it increases with crying. Tracheostomy in severe cases. In severe stridor bronchoscopy is indicated to rule out secondary abnormalities. Supraglottoplasty or aryepiglotoplasty is now a surgical procedure of choice. CO2 lasers, microlaryngeal scissors, or microdebrider is used to trim redundant tissues. Here we can see again the diagram, omega-shaped epiglottis, and here supraglottoplasty. And this is the video of supraglottoplasty for the management of
laryngomalacia. Laryngeal or saccular cyst. This is another congenital abnormality. Saccule at its interior and laryngeal ventricle has small outpouching called saccule or laryngeal appendix. Blind sac which extend upward between the false vocal cord and thyroid cartilage. Mucus-filled dilation of it. It may distort aryepiglottic fold, false vocal cord, or ventricle. Laryngeal ventricle or sinus morgagni is a fusiform fossa between the superior vocal cord vestibular fold and inferior vocal cord or vocal fold on either side extending nearly along the entire length of the larynx. Clinical features of laryngeal cyst, usually asymptomatic, occasionally enlarge and become infected, leading to horse stridor and repeatedly increasing airway obstruction. Diagnosis. Diagnosis is made by endoscopic shows shiny blue lesions in the area of epiglottic fold. And we can see here in blind sac which extend upward between the false vocal cord and thyroid cartilage and distorting the epiglottic fold, false vocal cord, or ventricles. Management. Different forms of treatment have been described for laryngeal cysts, such as aspiration, muscularization with laser ablation, and complete excision. Recurrence is directly related to the maintenance of remnant of the cyst wall. Laryngocele. Air-filled dilation of ventricle sinus of Morgagni. It is of two types, internal or combined. In internal laryngocele is confined within the false vocal cord medial to the thyroid membrane. A combined laryngocele extend upward and protrude through the thyroid membrane to the neck. Here we would see the diagram. In internal laryngocele confined within the false vocal cord medial to the thyroid membrane, and the combined that upwards and protrude through the thyroid membrane to the neck. Clinical features, intermittent hoarseness or respiratory distress on crying or straining. Rarely soft fluctuant swelling in neck above thyroid cartilage. Diagnosis, air-filled sac on plain X-ray of neck. Here we can see in this diagram and also here on lateral. Management, endolaryngeal cyst, endolaryngeal excision of cyst. If not possible, avoid muscularization. If cyst recur, lateral cervical approach extended via thyroid membrane at the superior ala of thyroid cartilage with subpericardial resection of the upper part of the ala. Rarely, tracheostomy is required in severe respiratory distress. Management, microlaryngoscopy involving the use of a carbon dioxide laser and has become the main therapeutic procedure for the treatment of internal laryngocele during the past 20 years. An external approach still remains the main therapeutic approach for the treatment of combined laryngocele. And other one, lymphangioma, cystic malformation, sometimes termed as cystic hygromas. Cystic hygromas are basically subtypes of lymphangioma, resulting from abnormal development of lymphatic vessels, macrocystic infrahyoid, microcystic suprahyoid, or combination of both. Investigations for lymphangioma, lesions can be visualized in utero by transvaginal or transabdominal sonography. Blood tests to detect AFP between 15 to 20 weeks can confirm the diagnosis. After birth, ultrasound or CT scan can help in diagnosis, but best imaging for lymphangioma is MRI. Next step for management is debulking lesion by endoscopic vaporization using a CO2 laser, surgical resection or sclerotherapy, tracheostomy if extensive involvement. And what is sclerotherapy? Sclerotherapy basically OK432 lyophilized mixture of group A streptococcus pyogenes with anti-neoplastic activity and bleomycin, a type of antibiotic,
are considered the most frequently used agents for sclerotherapy of cystic hygromas. Next is bifid epiglottis. Epiglottis fail in this anomalies. Epiglottis fail to fuse in midline, thus have a cleft extending down its tubercle. Pallister-Hall syndrome. Pallister-Hall syndrome, basically it's a autosomal dominant malformative disorder characterized by hypothalamic hematoma, pituitary dysfunction, and bifidic epiglottis. Basically, it's a combination of three diseases. Feeding difficulties leading due to aspiration, stridor due to collapse and enfolding of two half of epiglottis. Diagnosis by endoscopy. Management includes amputation of epiglottis and tracheostomy. Here we can see in the diagram bifid epiglottis. Next one is laryngeal web. Laryngeal web, basically it's a failure of complete canalization of the larynx, glottic or rarely subglottic. Majority involves anterior glottis, occasionally congenital posterior interarachnoids web occur. Clinical features of web. Variable degree of respiratory obstruction and dyspnea, inspiratory stridor, weak high-pitched squeaky voice, weak cry from birth and recurrent growth in infancy. Management of web. If the web is small, then in most of the cases it is leave alone. Longer web divided endoscopically with a knife or CO2 laser, and if thin, then subsequent endoscopic dilation. Thick web, endoscopic keel to prevent recurrence. Longer, thicker webs with inadequate airways. First tracheostomy then occurred at 3 to 4 days with laryngofissures. Endoscopic keels used to achieve and maintain the separation and prevent glottis scarring and stenosis after surgery. Patient usually returned 3 to 5 weeks for removal. Laryngofissure is also a procedure used to achieve division of web and insertion of a tantalum keel to prevent its reformation. Laryngeal atresia, basically it is incompatible with life unless there is associated tracheal esophageal fistula or emergency tracheostomy. Now we would come at glottic level. Vocal cord paralysis, second most congenital anomaly of larynx. Unilateral vocal cord paralysis occurred as a result of surgical injury to the unilateral recurrent laryngeal nerve. Vocal cord is in intermediate position, weak cry, mild stridor, dyspnea, and sometimes aspiration. Surgical intervention is not usually necessary. Either recovery occurs or other vocal cord compensates. Here we would also discuss about the Simpson's law. In a progressive lesion of the recurrent laryngeal nerve, abductors are paralyzed before the adductors. This means that in incomplete paralysis, that the vocal cord would be brought in midlines by adductor. But in complete paralysis, it would fall away to the paramedian position. And the other theory about this is Wagner and Grossman theory. The cricothyroid muscle, which receives its innervation from superior laryngeal nerve, keep the cords in paramedian position due to its adductor function. Bilateral vocal cord paralysis. It is basically a congenital abductor paralysis. Vocal cords lies in paramedian position with consequent inspiratory stridor and normal cry. Here tracheostomy is required in almost 50% cases. Here we can see in the diagram vocal cord paralysis, respiration, phonation with vocal cord paralysis, unilateral paralysis, and bilateral paralysis. Causes. Most causes are idiopathic hydrocephalus, meningocele, Arnold Chiari malformation, congenital myasthenia gravis, cardiomegaly, or abnormalities of great vessels. Benign congenital hypotonia. Next, we will discuss about management. 60% will eventually recover. Infant with inadequate airway and failure to thrive will require a tracheostomy. Endoscopic laser cordotomy or arachnoidotomy should be considered at the age of 11 or more. Congenital subglottic stenosis. Due to defective canalization of cricoid cartilage and conus trichus resulting in a small elliptical thickened cricoid and excessive submucosal soft tissue. It is basically the third most common congenital anomaly of the larynx.
Mild degree of stenosis present as inspiratory or biphasic stridor as a child becomes older and more active or as recurrent group. Diagnosis requires microlaryngoscopy and bronchoscopy Meyer-Cotton grading system. It is basically divided into four grades. Grade 1 stenosis up to 50%, in grade 2 from 51 to 70%, and in grade 3 71 to 99%. And in grade 4 stenosis become 100%. Next, we will discuss the management of stenosis, subglottic stenosis. Management, grade 1 usually requires no surgical intervention. Grade 2, laryngeal tracheal reconstruction with anterior cartilage grafting, generally without stent. Grade 2, mild, anterior graft with posterior cricoid split supported by an endoabdominal stent. And in grade 3, severe form, anterior and posterior grafting with stenting. And in grade 4, anterior and posterior grafts with prolonged stenting. Partial cricotracheal resection is an alternative technique. Laryngotracheal reconstruction. Here, it involves augmentation of laryngotracheal complex by anterior and posterior midline incision of the cricoid cartilage with the insertion of costal cartilage graft to expand the airway. Partial cricotracheal resection, complete resection of stenotic segment with end-to-end anastomosis of tracheal stump to thyroid cartilage. 98 for primary and 92% for salvage surgery. Here we can see in this diagram. Cricotracheal resection is used for management of severe subglottic stenosis. Subglottic stenosis is narrowing of the airway at the level of cricoid cartilage as been described in the video. The interior cricoid ring is being removed. The tracheal component is then removed, sparing a flap of posterior trachea. In the remaining cricoid, soft tissue stenosis is being removed. And here we can see the stitches in submucosal and in circles on distant tracheal ring brought together using the retention stitches.
Management if very small non-treatment or CO2 laser vaporization. Medium size intralesional steroids and intubation if it is of a large size primary submucous dissection. Very large circumferential or extension to trachea through tracheal wall surrounding tissue tracheostomy and awaiting spontaneous innovation. Laryngeal cleft. Laryngeal cleft it is basically failure of the posterior cricoid lamina to fuse. Laryngotracheal esophageal clefts, incomplete development of septum, most have associated congenital anomalies. Classification of the cleft. Type 1 extended down into the vocal cords, and type 2 below vocal cord into the cricoid. And in type 3 extend down into cervical trachea, and in type 4 extending down into thoracic trachea and may reach carina. Clinical features. Cyanotic attacks on feeding and recurrent chest infections, stridor. In type 2 and type 3, traumatic aspiration with recurrent pneumonia, sometimes with stridor and abnormal cry. In type 4, severe aspiration, cyanosis, and incipient cardiorespiratory failure. Management depends on the length of a cleft. In short, type 1 with no aspiration requires no treatment. With no aspiration required no treatment, minimal aspiration thickening the feeds. Significant aspiration or very short type 2 endoscopic repair of cleft in 2 layers. Nasogastric feeding tube until suture line has been healed. Longer type 2 or type 3, where it can reaches up to the level of cricoid cartilage. Approach anteriorly via extended laryngofissure with low tracheostomy to cover the procedure. After successful cleft repair, long-term gastrostomy feeding. In type 4, where it can reach up to the level of the carina, tracheostomy is unhelpful in stabilizing the airway. Short type anterior approach via cervical incision, long type lateral cervical approach in combination with thoracotomy or preferably anterior cervical thoracic approach via median sternotomy. Mortality 14% overall and 66% with type 4. Thank you. सीरियस में कौन से ब्रेक्स आपने देखे हुए इन सारे इन सब में सर इसमें हम लोगों ने एक मोस्टली जो हमारे सर आते हैं वेब वाले अक्सर देखते हैं हम लोग लैरिंजियल। जी सर लैरिंजियल वेब वाले। तो सर लैरिंजियल वेब के देखे हैं, वोकल कॉर्ड पैरालिसिस वाला देखे। बच्चों में नहीं देखे। जी सर वेब लैरिंजियल वेब मैंने यहाँ पे हमने देखे हुए मोस्टली लैरिंजियल वेब से। और क्या सीजन डॉक्टर हुए इन सारी लैरिंगो सील भी सर। नहीं सर। तो आपने देखा है लैरिंजियल वेब। जी सर। आपने देखा है लैरिंगो सील। तो लैरिंगो सील की क्या प्रेजेंटेशन थी? सर उसकी सब की प्रेजेंटेशन थी। एक वो फीडिंग का प्रॉब्लम था और सारे एंडोस्कोपिकली हमने उसका ये कंप्लीट किया ये कैसे पता गेम्स कंप्लीट के साथ आया फीडिंग का इवेंट्स याद नहीं इवेंट्स प्रेजेंटेशन किया जो लैरिंगो सील के मोस्टली पेशेंट नेक्स्ट स्वेलिंग के साथ जी सर नेक्स्ट स्वेलिंग के साथ एक्सटर्नल नेक्स्ट जी सर। और सेकेंडली आप उसको पेशेंट को जो बल से करवाते हैं जी सर वो मूव करते हैं पॉप जी सर। पॉप आउट हो ये उसकी दो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होती है बगैर उसमें और कोई कंप्लीट होती नहीं नेक्स्ट स्वेलिंग के साथ नेक्स्ट स्वेलिंग एक्सट्रीज में क्या किया था आपने तो एक्सीडेंट की एक्सटर्नल
कम मात्रा है, ठीक है। अच्छा, आपने क्या दोबारा बताइए। वो जो अफगानिस्तान से पूछा हुआ हाँ हाँ हाँ, उसका लड़ीजन है। उसका वेब उसका तो लेकिन मैं प्रॉपर्टी था। जी सर। ऐसे ही नहीं सर, उसका वेब लास्ट इंजरी के बाद, लास्ट इंजरी के बाद। जी सर। पेट्रोल जुड़ गया। उसका लड़ीजन फिशर क्या मेरे को खुशी करके उसको जी सर। जी सर। और तो आपने कौन सा म्यूजिक देखा था? सर ये वेब वाला लैरिंजियल सी वाला भी सर देखा, उसमें ना अक्सर जो स्वेलिंग होती है ना, फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है थायराइड कार्टिलेज लेटरल साइड पे सर, सॉफ्ट फ्लक्चुएंट स्वेलिंग होती है। हाँ जी, एक्सटर्नल टाइप। और सर उसमें वो ना कहते हैं कि जब ये रोता है ना तब इससे डिस्ट्रेस और इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर टाइप इतना नुकसान होता है, जब वो रोने से या क्राइम, जब कोई स्ट्रेनिंग वगैरह या कोई फिजिकल एक्सर्शन करता है ना, उस टाइम इसको थोड़ा स्ट्राइडर की एपिसोड वेब होती है। मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे ज्यादा मैंने लेरेंगो ग्लेशिया लेरेंगो ट्रीको ग्लेशिया के ज्यादा है, ये हमारे काउंटर ज्यादा होता है। इसमें कंप्लेंट यही होगी कि पेशेंट को जो ही ट्राई करता है तो स्ट्राइडर होता है, इसका एटीट्यूड स्ट्राइडर होता है और फीलिंग डिफिकल्टी है। तो पेशेंट की डायग्नोसिस, क्लिनिकल डायग्नोसिस हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में आपको पता चलता है कि उसका नेक और चेस्ट सर्कल होते हैं जब वो कंसिडर करता है जी बच्चा। उसमें क्लासिक यानी कि आप ये कंसर्न लेंगे कार्टेज उसके लेयर्स पे लगो, आपकी लेयर्स होगा उसमें कार्टेज स्कैटर ट्रांस लेयर करेगा, इंस्पायर करेगा, तो सारी चीजें रेडियल इनलेट में सकिंग होती है, तो फायर होगा। अगर लेयर्स उसका ठीक है तो फिर ट्रेकिया उसका सॉफ्ट होगा, जो सी शेप कार्टेज और वेल्व होते हैं वो सारे सॉफ्ट होते हैं। जैसे पेशेंट्स की जो है वो क्या ट्रीटमेंट है, ऑब्जर्वेशन, ये ग्रेजुअली 8 to 9 मंथ्स में ये रिकवर कर जाते हैं और इसके केसेस अगर डायग्नोसिस लेके क्या होता है, लेकिन अगर आप देखना है तो फिर आप ये को देखें एग्जामिनेशन मोस्टली सेरेंगो देशिया वाले मोबिलिटी काफी रेयर केस है, शायद जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट हो उसमें ये ज्यादा बच्चे प्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो एडल्ट्स को डील कर रहे होते हैं इससे हमारा डॉक्टर काम होता है, तो जब भी हमें फील्ड से कॉल आती है यही आती है स्ट्राइडर। जब भी स्ट्राइडर हो तो आप पीडियाट्रिक डॉक्टर को ही ये डिफरेंशिएट करेगा ये स्ट्राइडर है या क्या है, क्या फीचर हो गया आपके ज़हन में, कैसे आप एग्जामिन करेंगे और कुछ सीट if you see the call from pediatric department to the spider उसमें बेसिकली देखेंगे ना पेशेंट का, जब जाकर देखेंगे तो फिर उसका एक्सपायरेटरी डेट कैसा है सर, ठीक है, एक्सपायरेटरी डेट फिर उसका सर ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन हमें सर उसमें क्या मिल रहा है, जितना इसमें पैक में कितना हो सकता है, डिस्मा हो सकता है सर, और उसमें सर वीक क्राई हो सकता है, साइनोसिस अगर उसको ब्लूइशनेस तो स्किन हो रही है सर, और सर ये मोस्टली मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सर यही होती है, तो इसमें क्या करें हम लोग सर उसमें ये कि सर सबसे पहले तो अगर एज ए जूनियर डॉक्टर फर्स्ट ऑफ ऑल सर सीनियर को इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है सर, फिर उसके बाद एज अर्ली एज पॉसिबल बच्चे को सर अगर तो देखेंगे कि अगर मैनेज नहीं हो रहा सर, फिर हम उस टाइम हम इंट्यूबेशन की साइड पे भी जा सकते हैं, मोस्टली सेफ साइड होती है इंट्यूबेशन, और सर उसमें फिर इतना इसमें पैकेज बहुत ज्यादा हो रहा है तो सर हम क्योस्मी को एज ऑप्शन रखते हैं। जी सर बहुत कम, वो अगर इन रेयर केसेस जिस टाइम में हम बताया था सर 50% या 40% तक केसेस। जी सर बिल्कुल। जी सर। जी सर। जी सर। तो आप कैसे करेंगे डिफरेंशिएट? सबसे कॉमन एमरजेंसी पैनल ट्रेजिया भी होता है। जी सर। पैनल ट्रेजिया। जी सर। जी सर।
पेनल्टीज है कंसेशन कैसे है? सर उसमें जो है ना बेसिकली एक दफा हमने जो देखा था कि पेशेंट को सर हम एनजी बच्चा जो होता है ना उसको एनजी भी पास करके ना अगर तो एनजी से पास हो जाए तो उसमें हमें लग जाता है कि सर उसमें ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। तो अगर सर ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो एनजी भी जो है ना वो पास नहीं होगा। एक तो सर ये होता है। या पायलट पेनल्टीज या यूनिट पेनल्टीज में कुछ फर्क होगा नहीं? तो पायलट पेनल्टीज है इमरजेंसी एमरजेंसी जी सर। उसमें तो फौरी तौर पे आप उसको उसकी एयरवे रेस्टोर नहीं करेंगे तो इमरजेंसी होती है। जी सर। पेनल्टीज से मैनेजेबल जी सर। इससे क्या करना होगा? अगर कॉल आती है कि सस्पिशियस है पेनल्टीज क्या प्रोटेक्शन ब्रीथिंग डिफिकल्टी बेसिक ब्रीदिंग डिफिकल्टी ही होगी पेशेंट बच्चे को जो है। और सर उसमें साइनोसिस भी हो सकता है सर प्रेजेंट में। जी सर साइनोसिस जी साइनोसिस भी हो सकता है उसको इंट्यूबेशन की जरूरत सर। जी इंट्यूबेशन भी सर साइनोसिस करेंगे इंस्पायर नहीं करता इंस्पिरेशन नहीं हो सकती। जी सर। जी सर। तो कैसे असेस करना है आपको अगर किसी मीटिंग लेटर पर सर फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल एग्जामिनेशन देखेंगे उसके सर वाइटल्स वगैरह देखेंगे कि वाइटल्स क्या है सैचुरेशन कैसी है। सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप स्टेथोस्कोप की पहलू डाल दें जी सर। और उसकी जो ट्यूब होती है जी वो सर। नॉस्ट्रल करते हैं आपको बड़ी आसानी से अगर रादर देन कि आप एनजी जी सर। जी सर। सबसे आसान ये होता है कि पहलू डाल दें इसकी ट्यूब होती है जी सर। वो चेक करें दोनों नॉस्ट्रल्स इससे आप थोड़ा अच्छा आइडिया ले जाए फिर खुद अपने नॉस्ट्रल में चेक जी करना सर उसमें डायफ्राम से डायफ्राम जो उसको डायफ्राम कहते हैं जी सर एक बेल छोटा वाला डायफ्राम बड़ा वाला। उसको तार ले मेटालिक जी सर। तार जी सर। से नॉस्ट्रल स्ट्रक्चर ठीक है जी और डायलिसिस इन्वेस्टिगेशन भी करनी होती है। ये तो क्लियर हो गया कि बायनल पैरालिटिस है इमरजेंसी एमरजेंसी जी सर। और कौन पे उसके हाइड्रेशन या ट्रिकियोसिस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इग्नेटर पैरालिटिस या इज ए मैनेजेबल सिचुएशन मैनेजेबल इसमें सिचुएशन। लेटर ऑन आपने उसको कंफर्म करना है आइदर जी सर। treated have nostril or body one nostril is not treated obviously then you have to plan it's an elective procedure फिर आप उसकी रेडियोलॉजिकल स्कैन कर लें और स्कैन करने के बाद उसको प्रोसीड करें। ठीक है उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती है स्कैन में एक दूसरे का और इसमें आप उसको फॉलो करेंगे नेजल कैविटी पोस्टीरियर कोना पे तो आप देख लेंगे वो बोनी है या सिर्फ सेप्टल है और अगर उसमें बोनी हो तो और टेक्निक है उसमें बोन को बर्न करके फ्लैट ये डिफरेंट टेक्निक्स होती है। कई लोग उसमें ट्यूब स्टेंट्स रखते थे बाद में लेकिन हमारा एक्सपीरियंस है कि उसमें क्लस्टरिंग यूनिट्स के साथ बड़ा मुश्किल होता है स्टेंट को हैंडल करना तो इसमें हम फ्लैट टेक्निक से उसको करते हैं क्योंकि पेशेंट आएगा तो पूरी प्रैक्टिकल हो सर बहुत आइए आप लोग कोई हेल्प से बचें आगे सर वो जो लेरिंजियल वेप उसमें कील जो होता है वो कह रहे थे कि सर वो 3 to 5 वीक्स तक मैंने जो उसमें देखा था क्लिक पर सर पर वो जो हमारे पास बच्चा आया था हमने उसका ज्यादा देर भी था उसका वो 3 मंथ इसलिए लगा था कि वो अफगानिस्तान चला गया एक्चुअली में आप उसमें कुछ सेलेस्टिक शीट भी रख देते हैं ठीक है अब हमारे पास सेलेस्टिक शीट को की लेरिंजियल स्टेंट्स होते हमारे पास अवेलेबल नहीं था हमने नेजल स्लिट को लेके उसको रोटेट करके उसके डीएम को रिलीज करके वो उसमें स्टिच कर दिया जिसको बाद में निकाला ठीक है ये लेरिंजियल स्टेंट्स डिफरेंट साइज शेप्स वो सारे अवेलेबल होते हैं उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमने लेजर स्प्रेड को यूज किया इसको साइज करके इसको फिक्स किया ठीक है इसलिए बड़ा जरूरी है कि अगर आप ये जो डील कर रहे हो लेरेंजियल पेरिटोमास और डील कॉमिशन के तो फुल रिस्पेक्ट टू डील कॉमिशन अगर आपने दोनों तरफ बायलैटरल ये कर दी तो वो फिर साफ कर सकते हैं उसमें कोशिश करें फिर 2 स्टेज प्रोसीजर करें 1 स्टेज में आप एक साइड पे कर दें जैसे हीलिंग होने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद 6-8 हफ्ते बाद दूसरी साइड दोनों तरफ से
से भी बड़ा केयरफुल हो जब भी आप एंटीरियर कॉमिशन में जो ग्रोथ होती है, चाहे वो बिनाइन हो तो उसको निकालने में बढ़िया क्या दोनों तरफ से कोई इंजन ना करना, इंजन में बच जाए। तो इंजन में बच जाए तो कैसे प्रेजेंट करेगा पेशेंट? हाई पिच का मतलब मुझे आम जबान से है ना, मेरे को सारा तेज आवाज से करीब तेज आवाज सुननी है जो फीमेल टाइप समझ सर बस बोला नहीं चलता। आपने पहले भी सर बताया ये लोग उसके थॉट्स देखो करेक्ट है, ठीक है। तो टाइट आवाज होती जाएगी और जो जो वो जुड़ता जाएगा पास वॉल्यूम डाउन, राइट, एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेगा, ठीक है। और एनी मोर क्वेश्चन regarding patient डायग्राम भी मैं देख रहा था, तो उसमें वो बता रहे थे प्रोन पोजीशन में डालेंगे तो उसमें उसका जो रेस्पिरेटरी है फ्लॉपी एपिग्लॉटिस है। अब like this is floppy, but this is fine position, fine। तो क्या होगा, ये लेटेगा तो वो यूं चला जाएगा, ठीक। तो आपको प्रोन पोजीशन में डालेंगे तो एपिग्लॉटिस नीचे आ जाएगा, पेटेंट हो जाएगा ऐसी। तो इसी तरीके से अगर उसमें कुछ और भी है, टंग एब्नॉर्मलिटी है, टंग भी फॉल कर रही हो तो स्पाइन पोजीशन में डाल, फॉल बैक फॉल, इसलिए जब हम लैटरल पोजीशन में क्यों करते हैं उस टेंडेंसीज या लैटरल पोजीशन में इसीलिए करते हैं कि टंग फॉल बैक ना, इसलिए जितने भी डॉक्स हम करते हैं फॉरन में इसमें बताया कि लेफ्ट लैटरल पोजीशन में डालते हैं, टंग फॉल बैक फॉर दिस वाइड स्टोरी। और कुछ मैडम्स अरे इस पे जा रही है प्रोसीड में क्या मतलब मैनेज, ऑफ कोर्स ये हमारे जो मेरा हमें करेंगे, व्हाई नॉट, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? तो इन शॉर्ट क्या मैसेज है आपका इस सारी लेरेंजियल एनोमलीज के बारे में? कंजेनिटल ये डिपेंड करता है कि कंडीशन में जो आया है टेक होम मैसेज, टेक होम मैसेज ये है नंबर 1, ये डिफिकल्ट केसेस होते हैं, जॉइंट टीम एफर्ट चाहिए इसके लिए, एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट सबसे पहले आईसीयू में आएंगे, एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट, ईएनटी पीडियाट्रिशियन या आईसीयू इंटरवेंशनिस्ट, एक जॉइंट टीम होती है जो इन बच्चों को मैनेज करती है। अगर आपने जो भी इंटरवेंशन करनी मस्ट बी pretty sure about your diagnosis, then proceed। तो डायग्नोसिस के लिए आपके पास पीडियाट्रिक फाइब्रोब्रॉन होनी चाहिए, ठीक है, और एक्सपर्ट एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए। तो फाइब्रोटिक ब्रॉन से आप उसकी काफी जो एनोमलीज, क्योंकि इसमें अगर आप पेशेंट को इंट्यूबेट करके बहुत ज्यादा आप एनोमलीज उसकी ओवरलुक कर सकते हैं, समझ लीजिए। इसमें एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर जैसे अपनिया में आपको पेशेंट देता है, उसमें आप उस फुल एयरवे को, अपर एयरवे और लोअर एयरवे और फाइबर ऑप्टिक आपके पास, आई नीड टू से यू मस्ट बी वेल इक्विप्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड फॉर दिस। समझ, इसमें बगैर प्रिपेयर होके प्लीज बाहर डालना, आपके पास टीम ना प्रॉपर हो,
So you may land in some trouble or some disaster. यहाँ पे ये देखो ठीक है। इसलिए अगर आपके पास ये सारा कुछ ना हो तो इनिशियली मैनेजमेंट के बाद आप टर्शियरी या प्रॉपर सेंटर पे इसको रखते हैं, ठीक है, उससे हैंडल ना करें, सेफ्टी फर्स्ट, ठीक है। Almost some presentation same sorry. So that uses the purpose fiber. तो ये आपके एग्जाम में भी बताने के लिए आपके पास होना चाहिए। अच्छा, इस दफा जो टॉप्स का एग्जाम था ना एमसीबीएस का भी रिसेंटली, उसमें एक वेरिएंट सवाल और है, वो था वेरिएंट सवाल, ठीक है, और लेरिंगोसील। तो यकीन करें कि शायद ही एक लड़के ने सही बताया। ये क्या डिफिकल्ट स्टडीज होती है? वेरिएंट सवाल था और यहाँ पे उसके वो बना हुआ वेरिएंट सवाल उन्होंने करवाया, और सर इसको था मेरे ब्रैंकियल सिस्ट भी उसको, तो ब्रैंकियल सिस्ट से वो हो गए और यहाँ पे लैटरल मैक्रो। अब सारे लोग कह रहे थे कि ये फॉर्म बॉडी है, फॉर्म बॉडी, तो ये क्या मुश्किल था सिनेरियो? फॉर्म बॉडी है कोई नहीं देखते हैं, नहीं अगर फॉर्म बॉडी एसोफेगस भी हो तो क्या वो ये स्पाइन के ऊपर होता है, यहाँ पे सी स्पाइन पे, तो सबने ये गलत बताया। बड़ा नाम था कि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल लेकिन आप ना नहीं वैसे डिस्कस कर रहे थे इसकी कोई इंजरी हो गई तो चेस्ट में या नेक्स्ट फेस इंफेक्शन हो, हां नेक्स्ट फेस इंफेक्शन। चलिए ठीक है, फिनिश्ड, मतलब मेरा करते हैं आप बताइए। तो इसमें आपको नजर नहीं आ रहा, मुझे नजर आ रहा। तो today our topic was congenital anomalies of larynx. So my take-home message is these are clinical patients. So while handling these patients, they must be well expertise and team interventionist and ICU interventionist, pediatrician, and anesthesia person must have experience of being small kids and ICU environment or pediatric ICU. So all these patients must have fiber optic nasopharyngoscopy and all the equipment that must be available regarding the pediatric equipment. Pediatric laryngobronchoscopic examination equipment must be available, and hi-fi gadgets like carbon dioxide test. So these are the basic requirements to handle these patients. And secondly, the most common in all these cases is the laryngomalacia patients. So these are the patients that the parents needs reassurance, and with the passage of time, this rider get better with the age bracket up to the 9 months to 1 year. So regarding the other anomalies like laryngeal cyst, laryngoscele, or lymphangioma, hemangioma, MRI is the investigation of choice. So all these patients must be dealt at some tertiary care system or hospital where all the facilities are. So if there is a lack of facilities, then you must manage the patient initially, then refer the patient to the tertiary care system. Okay. Anything else? Light control. अच्छा, उसमें पता क्या है मसला है? अब हम अपनी जो कमी कमाई क्या है, हम इनको फॉलो